देखो split gene concept were independently discovered by Richard J. Roberts and Philip A. Sharp in 1977. तो primarily split gene concept were discovered by Richard and Philip. An interrupted gene or split gene is a gene that contains sections of DNA called exons, which are expressed as RNA and protein, interrupted by sections of DNA called introns, which are not involved in protein expression. So it says that the interrupted gene or split gene is a gene that contains a sections of DNA, right? That is called exons, and which are expressed as RNA, जे कि RNA हिसाब से निचु एक्सप्रेस करि पारे एवं प्रोटीन हिसाब रे भी. So that interrupted by sections of DNA also, that is called intron, and which are not involved in the protein synthesis বা protein expression. तो इंट्रोन पार्टा प्रोटीन एक्सप्रेशन रे इन्वॉल्व हुए नहीं, बट एक्सोन पार्टा प्रोटीन एक्सप्रेशन रे इन्वॉल्व होता है. द डीएनए सीक्वेंस इन द एक्सोन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर कोडिंग प्रोटीन. जो डीएनए सीक्वेंस था एक्सोन भितर से गोटे इंस्ट्रक्शन दे था कोडिंग करने प्रोटीन मानकर बा कोडिंग प्रोटीन्स करने इंस्ट्रक्शन दे था. बट इंट्रोन कथा देखिले इंट्रोन वाज नॉट अंडर एट फर्स्ट एंड दे वे कॉल्ड नॉन कोडिंग और जंग डीएनए. इंट्रोन मान को नॉन कोडिंग कि जंग डीएनए कह जाए. तापर आसो आरएनए स्प्लाइसिंग. आफ्टर ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्री एमआरएनए. प्री एमआरएनए कौन द इनिशियल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स है दैट ए प्रोसेस कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग अकर. ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड and exons are joined together to form mature mRNA. This mature mRNA then leaves the nucleus and is translated into protein. And then mature mRNA leaves the nucleus translated into protein. So that is split gene concept. So देखो जदि आपको मु शॉर्ट फॉर्म रे डिस्क्राइब करी स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट प्रथम डिस्कवर्ड होता रिचर्ड एंड फिल्म का द्वारा इन 1977. से कहले गोटे इंटरप्टेड जीन और स्प्लिट जीन हूँ गोटे प्रकार जीन जहाँ पाखे कि गोटे सेक्शंस ऑफ डीएनए अच्छी ताकू एक्सोन कह जाए. ठीक अच्छे. एंड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए एंड प्रोटीन एंड द पार्ट व्हिच कंटेन्स ए सेक्शंस ऑफ डीएनए एंड व्हिच इज नॉन फंक्शनल दैट इज कॉल्ड इंट्रोन पार्ट. तापर आम आग को बढ़ले देखा पाइबा जे DNA sequence in the exon provide instruction for coding of the protein, but intron कथा देखिले सेटा होचे नॉन कोडिंग पार्ट जंग डीएनए भली काम करूची. आरएनए स्प्लाइसिंग होचे आफ्टर ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्री एमआरएनए. ए प्रोसेस कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग अकर. जेते बेले गोटे जीनटा प्री एमआरएनए रे ट्रांसक्राइब्ड हो जाए से गोटे प्रोसेस रे गति करे जाको आरएनए स्प्लाइसिंग कहा जाए. During the splicing the introns are removed and the exons are joined. इंट्रन गुड़ाक रिमूव हो जाती, एक्सोन गुड़ाक जॉइन हो जाती टू फॉर्म द मैच्योर एमआरएनए. एंड दिस मैच्योर एमआरएनए देन लीव्स द न्यूक्लियस एंड इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. तापर से मैच्योर एमआरएनए गुड़ाक न्यूक्लियस बाहर को पड़े जाती एवं प्रोटीन ट्रांसलेटेड हो जाती. सो यहाँ हूँ स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट. गोटे जीन को स्प्लिट कलापर ता भितर इंट्रन आउ एक्सोन को पाइबा. एक्सोनटा हूँ माने कोडिंग पार्ट जे कि डीएनए को सिंथेसिस करे थाए, बट इंट्रोनटा हूँ नॉन कोडिंग पार्ट जे कि जंग डीएनए हिसाब से काम दिए. आउ आरएनए स्प्लाइसिंग गोटे एमती मेकानिजम जे आफ्टर ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए देन गोटे प्री एमआरएनए गोटे प्रोसेसटा आरंभ हो जाए. से प्रोसेस ना हूँ आरएनए स्प्लाइसिंग. तापर स्प्लाइसिंग समय इंट्रोन आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड टुगेदर to form a mature mRNA. So this mature mRNA then leaves the nucleus and is translated into protein. So